Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. नमस्कार रंगा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2371-7106, 2331-4444 और 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले STD कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ रंगाबश्यम। Thank you, Subodh. The top stories. Government announces issuance of new sovereign gold bonds. Foreign funds pump in over 26,500 crore rupees in domestic equities in the month of December so far. And Brent crude futures fall for the 7th straight week, dropping nearly 4% in the past week. सरकार ने नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने की घोषणा की। दिसंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 26,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया और लगातार 7वें सप्ताह ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में गिरावट, एक हफ्ते में लगभग 4% गिरा। And now for all the details. The Union Government has announced the issuance of new sovereign gold bonds, scheme 2023-24 in two tranches. The new sovereign gold bond series 3 subscription period is scheduled from the 18th to the 22nd of December, while the series 4 will be available from the 12th of February to 16th of February 2024. The sovereign gold bond scheme was launched in November 2015 to reduce the demand for physical gold and shift a part of the domestic savings used for the purchase of gold into financial savings. The sovereign gold bond scheme was launched to reduce the demand of physical gold. आइए, हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से। योगेश, स्वागत है आपका। सवाल पूछें। शुक्रिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले वीरेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहूँगा और शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो मुझे पोर्टफोलियो ट्रैकर आपने रेकमेंड किया था वो वाकई में बहुत कारगर है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं देख पा रहा हूँ अपनी पूरी नेटवर्क एक जगह पे, और साथ ही साथ मैं उसको कंपेयर भी कर पा रहा हूँ सेंसेक्स के साथ में, और एसेट एलोकेशन मेरा कैसा है या किस स्टॉक में मुझे कितना एक्सपोजर मिल रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो ये एक बहुत ही कारगर साबित होने वाला है मुझे लगता है मेरे लिए। दूसरा सर, मेरा सवाल जो है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के है कि आपको क्या लगता है कि अब हम 2024 में आने वाले हैं, तो क्या अभी भी इसको हम एक स्पेकुलेशन मान करके अभी डिस्कार्ड कर सकते हैं, या फिर ये फ्यूचर का कोई ऐसा एसेट लग रहा है जो फ्यूचर में ज्यादा इक्विटी की तरह ही प्रभाव डालने वाला है? नहीं, क्रिप्टो करेंसी का अंडरलाइन कुछ भी नहीं। ये एक स्पेकुलेशन का, एक अंधाधुंध स्पेकुलेशन का एक तरीका है, और जब बहुत सारे लोग इसके बारे में उत्साहित होंगे, किसी चीज का दाम बढ़ना अपने आप में कारण नहीं हो सकता लगाने के लिए, या दाम गिरना अच्छा नहीं हो सकता है कि अब ये अट्रैक्टिव हो गया है। आपको सोचना चाहिए कि जब आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, बॉन्ड खरीद रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ अंडरलाइन है। क्रिप्टो में कुछ अंडरलाइन नहीं है। बहुत लोग खरीद रहे हैं, इस वजह से दाम बढ़ रहा है। और सोना भी आप कह सकते हैं ऐसा ही है कि उसका वर्थ कुछ नहीं है, आप उसको लॉकर में रखते हैं, लेकिन चूंकि सोना का 1000 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, हजारों साल का, और
वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है और जिसका कि और सेंट्रल बैंक भी होल्ड करते हैं। ये क्रिप्टो तो ये तमाशा है और ये तमाशा काफी ज्यादा चल गया। एक समझदार निवेशक को इससे दूर रहना चाहिए। Right. And let's move on and take our next caller. We have Sanjay joining us from Mumbai. Good evening, Sanjay. And what's it that you want to talk about? Sir, it is said that gold and equity has negative correlation, but at present, gold and equity both are moving in the same direction. Is that this theory is no more valid now, or this theory is not correct now? Okay, yeah. Yes, Dhirendra. Yeah, it is generally not related, negatively correlated. But that is, all the rules that we actually come across, they are generally true, but not necessarily perfectly always true. And this could be one such thing. I can tell you, in global financial crisis, when the market was tanking and, falling freely like in an unprecedented way, bonds were being questioned, and in fact that was, the collapse of Lehman Brothers led to a crisis of confidence of sorts that many people were not willing to even consider bond as a relatively safer investment avenue. That is a time when actually gold took off. That is a time when actually gold saw one of the biggest bumps, biggest rise. But that does not mean, if you look at 20-year, 30-year, 40-year history, you have to see the return. And I think one thing is very clear, that return is directly correlated to its earning potential. A bond price can be very, like, for example, a bond is a very precise measurement. There is a formula which can actually be used for calculating a bond price, which is the maturity date, how much money it will give you by way of coupon in the interim, and what is the likelihood of getting that money back, your principal and interest on time. If it is reasonably 100%, which in case of sovereign bonds we expect it to be, then there is a very precise formula which should be able to give you the price of a bond. That is true for equity as well, if we know what is going to be the future cash flow of the, future cash flow of the company and the underlying profitability. But that remains uncertain. Because of a variety of things. Cyclicality of market, cyclicality of economics, or cyclicality of demand and supply, whatever. Relation to the linkages of that particular segment. But in case of gold, I don't see a reason. But generally speaking, I still feel that unlike any other asset, gold will be able to preserve a value. And right now we have been witnessing bouts of uncertainty, and the traditional, conventional, besides investment, gold is also a form of consumption. The wedding season and the number of retail outlets that you see. And now we are witnessing, a huge demand being created. It's a consumption story as well. So, you can't really question that why it is violating the law. Right. जी, अगले कॉलर हैं जयपुर से जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, धन्यवाद सर। एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो है वो कैसे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, और इक्विटी सेविंग फंड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में मतलब वो दोनों का हमको लगता है रिटर्न तो एक ही जैसा आता है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 75% डेट में, इसमें 25% में है। तो बताएं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में खासकर। यस धीरेन्द्र। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से उम्मीद की जाती है कि वो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में मदद करेगा, और क्योंकि इसमें एक चौथाई आपका पैसा इक्विटी में लगा रहता है, बाकी पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। यहाँ बहुत भारी गिरावट या नुकसान की संभावना कम होती है, और ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड का ट्रैक रिकॉर्ड जो है इस एलोकेशन के बावजूद उतना जबरदस्त नहीं है। अगर आप देखें कंजर्वेटिव हाइब्रिड या इक्विटी सेविंग फंड जहाँ पे आपको 8-9% का रिटर्न मिल पाया है, फिक्स्ड इनकम फंड से लंबे समय में उम्मीद है कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न देगा, लेकिन अभी तक इसके खर्चे के बाद जिस तरह का रिटर्न जनरेट पाया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड नहीं हो पाया है। अगर आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का टेस्ट है या आपको जरूरत है, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर होंगे अपना 25% पैसा इक्विटी में लगाइए, बाकी 75% पैसा शॉर्ट टर्म डेट में लगाइए, या फिर
कोई ऐसे फिक्स्ड इनकम एवेन्यू, म्यूचुअल फंड आपके लिए फिक्स्ड इनकम का आखिरी एवेन्यू नहीं है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखना चाहते हैं और आपका पैसा अगर पीपीएफ में लग रहा है, ईपीएफ में लग रहा है, उसको रिटेन कीजिए और उसको अपना फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मानिए। Right. And just to remind our listeners about our phone numbers. Our phone numbers for this phone-in program is 2331 4444, 2371 7106 and 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code. That's 011 before the numbers. And as you know, this is the phone-in edition of Market Mantra, where we are focusing on mutual fund and related issues. And as always, we have our expert Dhirendra Kumar joining us on the program. Dhirendra, just to talk about the sovereign gold bond, we just now discussed about gold as an asset. Although you have your own viewpoint on gold, but what would you say about this sovereign gold bond, since it gives some edge over the normal gold? And if a person wants to diversify, obviously yes, you can't compare it with equity, but to have diversification, won't you recommend? Yeah, sovereign, if you're committed to having gold, and there could be reason why you should have gold. It definitely, it is something which behaves differently, and it could be a meaningful diversification, and one should have a small allocation. And if you have to consider gold as an investment, then sovereign gold bonds actually happens to be the finest choice, simply because all other form of gold ownership, you start from jewelry. Jewelry has the highest trading cost. You buy today and sell tomorrow, you will be down by 15% by way of making charges and let's call it transaction charge. And if you think of gold coin or any other form, price might appreciate, but you will still you will get little less than what you paid for. This is if you buy a mutual fund, if you buy a mutual fund which invests in gold or a gold ETF, it will have a cost. It will have a management fee, it will have an expense ratio, and you can also be bearing a transaction cost there if you're buying the ETF from the market. If you buy sovereign gold bonds, one is that you get return as much as the gold, and over and above that you get 2.5% interest as well. Not only that, if you buy the sovereign gold bonds in the primary issue as it is open right now, and 3-4 times in a year the sovereign gold bond issues are being made by the government, there is absolutely no question about the safety of it. Second, you hold it for 8 years, you get 2.5% every year. Then after 8 years, whatever return you got, whatever appreciation you may get, that will be completely tax free. So I think combining these three things, it becomes that makes it the most attractive way of actually riding gold prices. जी धीरेन्द्र, अभी हम समय समय पर जैसे निवेश के बुनियादी नियमों को दोहराते रहते हैं, क्योंकि अभी बाज़ार लगभग ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, बल्कि है ही। और आप पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन हमारे साथ नए श्रोता जुड़ते रहते हैं, नए निवेशक आते रहते हैं बाज़ार में। तो नए छोटे निवेशक ऐसे समय में क्या करें? क्या बाज़ार से दूर रहें या कदम रखें? तो कैसे रखें, उसका क्या तरीका होना चाहिए? और पुराने निवेशक क्या करें, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा ये बढ़ गया है, हम पैसे निकालते हैं। जी 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 नहीं, सुबोध जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग समय समय पे नहीं, मैं लगातार ही लोगों को निवेश और बचत और निवेश के मूल मंत्र बताता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, या मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं ये बताना, लोग इसको भूल जाते हैं, भूल ही नहीं जाते हैं, क्योंकि और लोग जो भी इन्वेस्टमेंट बेचते हैं वो आप देखते होंगे कि किसी न किसी ने लोगों को बहुत उत्साहित किया है क्रिप्टो में पैसा लगाने के लिए, कोई और चीज खरीदने के लिए, कोई और चीज बेचने के लिए, और जो आपके काम की चीजें हैं वो केवल 4-5 है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत जगह इन्फ्लुएंसर्स आ गया, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में अपना समय भी बिताते हैं, पैसा भी गवाते हैं, और सेबी की स्टडी कहती है कि 90% लोग अपना पैसा डुबाते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेवारी की चीज है, जिम्मेवारी की बात है कि आप लोगों को बहुत बेसिक चीजों के बारे में बार बार रिमाइंड करते रहिए, क्योंकि
उटपटांग चीज बताने वाले लोग, उनको बहुत बड़ा इंसेंटिव मिलता है ये अजीबोगरीब या गलत सलाह, गलत चीज समझाने में, बताने में, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है। मेरी सलाह होगी कि ये बाजार बढ़ा हुआ है, अगर आपने पैसा लगाया है, बढ़ गया होगा तो थोड़ा लग रहा होगा कि पैसा निकाल लिया जाए। मुझे लगता है ये समय है जिस समय थोड़ा चिंतन कीजिए। 4-5 चीज आपको करना चाहिए और 10-15 चीज आपको नहीं करना चाहिए। 4-5 चीज जो आपको करना चाहिए कि आपका पैसा लंबे समय का हो, जो इक्विटी में लगा हुआ हो। देखिए कि ये पैसा SIP से हो रहा है। अगर ये पैसा कुछ खास रकम का हो गया है, अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपए लगा रहे थे और कई सालों से लगा रहे थे और अब ये इकट्ठा होकर 10 लाख रुपया हो गया, 5 लाख रुपया हो गया, तो मेरी सलाह होगी कि 10-20% निकाल के एक एसेट एलोकेशन निर्धारित कीजिए कि आप 20%, 25% अपने पूरी पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आप फिक्स इनकम में रखेंगे, ताकि इसके 2 फायदे हैं। एक, अगर बाजार गिरेगा तो आपके पास पैसा होगा इक्विटी में दोबारा लगाने के लिए। दूसरा, आप नीजर तरीके से पैसा नहीं निकाल रहे हैं, 1/4 निकाल रहे हैं, 1/5 निकाल रहे हैं, और आप ये इसको फिर रीबैलेंस कर पाएंगे तो एक आपके पास मेथड होगा गिरे हुए बाजार का फायदा उठाने का। और अगर बाजार नहीं गिरता है तो आपको बहुत अफसोस नहीं होगा, क्योंकि 80% या 75% पैसा आपका इक्विटी में अभी भी लगा हुआ होगा। तो आप एक मेथड बना लीजिए जिसके जरिए आप गिरावट से भी बच पाएंगे और गिरावट का फायदा भी उठा पाएंगे, और गिरावट होने पे आपको थोड़ा कम अफसोस होगा, और एक आप डिसिप्लिन इन्फोर्स कर पाएंगे। दूसरा चीज की कम समय का पैसा आपको इक्विटी में लगाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको इस पैसे का, अगर आपने किसी उद्देश्य से पैसा लगाया था और वो पैसा पूरा हो गया, आपने सोचा था कि 5 साल के बाद आप डाउन पेमेंट करेंगे घर खरीदने के लिए, और वो पैसा बाजार बढ़ने की वजह से 3 साल में ही हो गया है, मकान ढूंढिए और आज ही जाकर के बेच के उस उद्देश्य की पूर्ति कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है कि किसी फाइनेंशियल गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे और वो गोल आपका समय से पहले पूरा हो जाएगा। Right. And let's also talk about SIP. SIP is at the highest, level now on a monthly basis. What is it that's bringing so much of money into this? Many reasons, but the primary reason is that people are actually benefiting from SIP. The SIP in equity fund is the only thing which investors have done, and I don't think anybody who has done SIP in the last 3 years would have lost money. They have made money, and they have made more money than they would have made in a recurring deposit. There is reason, and not only that, SIP is a mechanism whereby you are able to build some meaningful capital with a small, with a small savings, 5,000 rupee, and then in 3 years' time you would have accumulated 1,80,000 rupees in your locker. And if that becomes 3 lakh rupees, you feel very happy about this capital, simply because you could not have imagined having this money in the first place, or even in a recurring deposit. So magic of coupled with high return. 3 साल से 5 साल से मैं Yes. Hello. Ji. Yeah. Go ahead. Yeah. Yeah. So this is what is actually making it SIP very attractive. But I'm not very happy with this, because we are happy simply because nobody used to do SIP. Now there is a greater belief in SIP, and it is rising. Last month it was 17,000 crore contribution in a month from investors. But in a country like ours, the total number of mutual fund investors are 3 crore, and of which the 17,000 crore coming into SIP in equity fund is a very tiny component, because last month there was also IPO boom. Couple of IPOs were launched. Initial public offer of companies, shares. And in those 5-7 IPOs, investors invested something like 5.5 lakh crore. 5.5 lakh crore is almost like 2 years of SIP money. So there are 2 ways of looking at it. In a country like ours, it is a good thing that, it is picking up. It is happening. And, we have happy customers, happy investors. But in a country like ours and of our scale, where everybody needs to be doing SIP, not to support the economy, not to support the mutual fund industry, simply to take care of their financial well-being in their retirement, because they may not have a fallback, they may not have the cushion, they may not have the safety net. So I think this has to become even more sizable. In fact, if every family is not doing some meaningful saving and putting that money into equity for the long term,
I think it will be misfortune for them because it will be very easy to be able to, build this habit and benefit from it. But if they are unable to, the time will be gone because the magic of compounding, the biggest advantage that you derive, the simplest thing that anyone can do is invest regularly and invest little more than you can after putting in some work, some effort, and increase your time frame, increase your amount of savings and increase your time frame. Do it for 5 years, and I don't think you need any briefing, any learning, or any expert opinion on this. Right. Let's move on and take our next caller. We have Ravi Shankar joining us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. सर जी मैं इक्विटी में सिप के थ्रू पैसे लगाता हूँ. रविशंकर जी अपने रेडियो की आवाज प्लीज कम कर दें. सर जी मैं 5 साल से जी इसमें यूटीआई के फंड में पैसे लगाता हूँ. यूटीआई के आपका ये प्रोग्राम रोज का सुनता हूँ. सर जी मेरे दिमाग में ये आता है कि ये क्या इसमें इकट्ठा पैसा भी लगाया जा सकता है सिप के अलावा? जी हाँ, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं या एसआईपी के जरिए लगा सकते हैं. और अगर आपके पास हर महीने अगर कुछ पैसा एसआईपी में जो करते हैं उससे भी कुछ रकम बच जाता है, हर महीने तनख्वाह मिलने के पहले जो बचा हुआ रकम आपके बैंक खाते में है उसको लगा दीजिए. और ये लगाना बहुत ही आसान है. जैसे आप एसआईपी करते हैं उस समय वो आप ऑनलाइन एक दो एक्शन से आप अपने फंड में अपने फोलियो में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. जी अगली खबर पे नज़र डालते हैं. दिसंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने 26,505 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे हैं और इसके साथ ही भारतीय पूंजी बाजार में इस महीने उनका कुल निवेश 30,852 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. ये आंकड़े NSDL ने जारी किए हैं. ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक 5,506 करोड़ रुपए लगाए. इस साल अब तक विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में 1,31,000 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 55,867 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं. And Dhirendra, to talk about various asset classes, what would you say apart from equity, apart from bond, if someone wants to take the benefit of investing in real estate virtually, can he do so? Are there options available to invest in the realty sector virtually? Yes, there is an option, and there is a fast evolving, well regulated. First and foremost is that avoid any informal, unregulated investment in real estate. And my understanding is that for most people, having a home is a very critical goal, and it is not investment. It can well prove to be an investment at some future date but it's an asset undoubtedly, which gets you a shelter and gets you helps you save rent. But beyond that, yes, real estate investment trust has come into being. There are a couple of options there. They give you modest, and most of these real estate investment trusts, their underlying is commercial real estate, which is very high on rental yield. At the same time, they represent or they are able to achieve decent appreciation over a long period of time. So you will get decent income, which is better than most of the residential real estate, the way people buy a whole house and actually rent it out to somebody. There, the rental yield can never exceed 2-3%, and lot of headache. But real estate investment trust is proving to be an interesting thing. But we have very few options. Let it evolve. I think it is expected that in a few years' time, it will evolve where investors will have a choice of decent return and appreciation coming from real estate as an underlying asset. और धीरेन्द्र, अगर हम जैसे अभी मैंने FPI की स्टोरी पढ़ी और इस पर हम गौर कर रहे हैं कि अगर हम इस साल के आंकड़े देखें तो भारतीय बाज़ार कुछ महीनों को छोड़ दें तो वैसे विदेशी निवेश आकर्षित करता रहा है. और इक्विटी में अभी दिसंबर के ही 8 तारीख तक के आंकड़े हैं, ये 26,505 करोड़ रुपए हैं इक्विटी मार्केट में. और कौन सी चीज़ है अभी जो भारतीय बाजार को विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बना रही है? तुलनात्मक तौर पे भारतीय कंपनियां या भारतीय इकोनॉमी अकेला एक आइलैंड है
एक बड़ी इकोनॉमी जो इस रफ्तार से बढ़ रही है। और इन्वेस्टमेंट जब कोई विदेशी जब करते हैं तो देखते हैं कि आप कहाँ पैसा लगा सकते हैं और बेहतर रिटर्न कहाँ पे है, कहाँ पे कम रिस्क है, कहाँ पे बेहतर बाजार है, कहाँ पे ग्रोइंग बाजार है। और वहां पे मुझे लगता है कि भारतीय बाजार काफी अट्रैक्टिव साबित होता है, खासकर जब दुनिया भर में एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे लोग बड़े उत्साहित नहीं है वहां के भविष्य के बारे में। उसके अलावा जो दूसरा कारण है कि पिछले 30 साल से अमेरिकी बाजार में जो ब्याज दरें थी वो पहली बार, अगर आप सोचिए कि आधा प्रतिशत ब्याज दर था और अब वो बढ़कर के 5.5% हो गया है। इसका अगर उनके अर्थव्यवस्था पे अभी असर नहीं पड़ा है तो बस समय की बात है, इसका गहरा असर पड़ेगा। ये 10 गुना 11 गुना ब्याज दर बढ़ जाना और ऐसे इकोनॉमीज में जहाँ पे अधिकतर लोग इंडेटेड है, जहाँ पे उधार देने का की प्रथा है, प्रचलन है, लोगों के लिए मेन स्ट्रीम है, मकान को उधार लेकर के ये सब सर्चली खरीदा जाता है। तो वैसी स्थिति में उन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में लोगों का चिंतित होना या उत्साहित नहीं होना या ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना भविष्य के लिए काफी वाजिब है। तो रिलेटिवली अट्रैक्टिव और काफी बड़ा ब्रॉड मार्केट अवेलेबल होना और उसके अलावा हमारा बाजार जिस तरह का यहाँ पे बदलाव देखा जा रहा है, जिस तरह से ब्रेड्स ऐड हो रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में 5-7 साल पहले हम सोचते भी नहीं थे और अभी मैन्युफैक्चरिंग काफी एक मेन स्ट्रीम चीज हो गया है, जिसके वजह से एक डोमेस्टिक कंजम्पशन जो एक थीम था वो जितना जोर पकड़ रहा है वो हमें चारों तरफ देख के। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ ब्रॉडनिंग ऑफ मार्केट है, मतलब इकोनॉमी छोटे छोटे शहर का इम्पोर्टेंट होते जाना और इकोनॉमिकली रेलेवेंट होते जाना, ये काफी बड़ा बदलाव है। Right. And very quickly, before we move towards the end, how does the NPS Tier 2 investment compare with mutual funds? You know, Tier 2 you can withdraw at any moment. So if someone has a big chunk of money, would it be prudent to invest in Tier 2 of NPS or in a mutual fund? No, I think Tier 2 has emerged as a very attractive thing. And in fact, NPS has become very attractive. Also because mutual fund has become a little less attractive in a sense that earlier all the gains from equity fund was tax free. All the returns from debt funds were treated in a more, in a more concessional manner, so to say. You could have, held it for 3 years and indexation and all that. The same benefit is available for Tier 2. Not only that, NPS is very attractive simply because their focus on cost. Right. They are in fact, the cheapest of mutual funds will compare, the cheapest mutual fund will be more expensive than the normal NPS plan. Fine. Yeah. Right, Dhirendra. And let's take a look at some of the other news items. Global crude oil prices fell for the 7th straight week, the longest streak of weekly declines in half a decade on lingering oversupply concerns. So the Brent crude futures ended the week at $75.84 per barrel, slipping 3.8% during the week. US crude futures finished the week at $71.23 per barrel, also dropping 3.8% during the week. धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And we would like to thank all our callers for their active participation in today's program. And as you know, thrice a week we have phone-in program on Market Mantra. That's Saturday, Sunday and Monday. But our Sunday programs are specifically focused on mutual fund and related issues. And before we close, let's take a quick look at the top stories. Government announces issuance of new sovereign gold bonds. Foreign funds pump in over 26,500 crore rupees in domestic equities in the month of December so far. And Brent crude futures fall for the 7th straight week, dropping nearly 4% this week. सरकार ने नए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने की घोषणा की। दिसंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 26,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और लगातार 7वें सप्ताह ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में गिरावट एक हफ्ते में लगभग 4% गिरा। And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी? करण, बताना। ही इज एन LIC एजेंट। दैट्स ग्रेट। कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो? करण के पापा हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए
सही एडवाइस देते हैं। हमें अपने लाखों LIC एजेंट्स पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं। LIC में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari.